Hello students, hope you all doing well. So here I'm Gayatri Pawar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gujarat. So here I'm back with an online lecture series on company account subject. So let's start the lecture. In today's lecture, we are going to start Accounting Standard 15. Okay, let's start with the lecture. So the name of Accounting Standard 15 is Employee Benefit. Name of the accounting standard 15 is employees benefit. So this accounting standard treat with the employees benefits. This accounting standard tells us the accounting treatment of employees benefits. Okay, so let's move on. Applicability of accounting standard 15. Where this accounting standard 15 will apply. Okay, so let's see. Accounting standard 15 is applicable to the following enterprises at any time during the accounting period. So see on which enterprises this accounting standard will be applicable. So you see, enterprises having their equity or debt security listed whether in India or outside India. If there is an enterprise whose equity and debt securities are listed in the India or outside the India. So basically, the enterprises whose equity and debentures are listed as listed enterprises. This accounting standard will applicable on listed companies or listed enterprises. Okay. Next, the enterprises undergoing the process of getting their equity or debt listed, or it will also apply on those enterprises who are in the process, which are in the process of the listing. Okay. तो ऐसी कंपनीज ऐसी एंटरप्राइजेज जो लिस्टिंग के प्रोसेस में चल रही है, लिस्टेड होने के प्रोसेस में चल रही है, उन एंटरप्राइजेज पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एप्लीकेबल होगा. बैंक्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग इंश्योरेंस बिजनेस, all enterprises including industrial, commercial and business reporting enterprises having an annual turnover of more than 50 crores in preceding accounting period based on the audited financial statement. So all the enterprises including industrial and commercial and business reporting enterprises whose turnover is more than 50 crores in preceding accounting period in which the financial statements are audited. Okay, so enterprises whose industries or any commercial organization enterprises whose turnover is more than 50 crores. Okay, on those enterprises also this accounting standard will applicable. Okay, the next, enterprises including industrial, commercial and business reporting enterprises having borrowings including public deposits of more than 10 crores. All the enterprises having borrowings including public deposits more than 10 crores, जिनकी borrowings 10 crores से ज़्यादा है including public deposits, on those enterprises this accounting standard will be applicable. Okay. The next, holding as well as the subsidiary enterprises of any of the ones mentioned above at any time during the accounting period. So these enterprises accounting standard 15 will applicable, and subsidiaries of all these enterprises also this accounting standard will be applicable. Okay, so in enterprises पे भी accounting standard 15 applicable होगा और इनकी subsidiary companies पे भी accounting standard 15 applicable होगा. Okay, yes. Now let's move on. All the enterprises that do not form part of ones mentioned above under the point A and have 50 or more persons on an average employed during the year, there are however exceptions of such enterprises which can be referred to in AS 15. कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पे जो ऊपर मेंशन किसी भी एंटरप्राइजेस से बिलोंग नहीं करते, इन कैटेगरीज में नहीं आते, फिर भी उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एप्लीकेबल होगा. ये रिवाइज करा गया 2005. ओके, एंड ऐसी कंपनीज जो इनके अंदर इन कंडीशंस में फॉल नहीं होती है और जिनके पास एम्प्लॉइज मोर देन 50 एम्प्लॉइज एट द टाइम एम्प्लॉयड है, तो ऑन एन एवरेज 50 और मोर एम्प्लॉइज अगर एम्प्लॉयड है, देन ऑल्सो ऑन दोज कंपनीज आल्सो AS 15 will be applicable. Okay, yes. Now first, what do you understand by an employees benefit? We have talked about on which enterprises this accounting standard will applicable. Now
understand the employee's benefit. So let's see. As per the Accounting Standard 15, an employee is defined as a person rendering service to an enterprise on a full-time, part-time, permanent, casual, or temporary basis. So, according to as per the Accounting Standard 15, all the employees, all the persons who are rendering the service to an enterprise, it may be that employee may be a full-time, a part-time, or a permanent, casual, or temporary basis employee. Okay, so on all these employees are included in the employee of the firm, employee of the enterprises as per Accounting Standard 15. So as per Accounting Standard 15, all the employees who are rendering the services in any enterprises, it may be that the employee may be full-time, part-time, permanent, casual, temporary. All are included in the employee of the enterprises. Okay. Yes. Then for the purpose of AS 15, employees include whole-time directors and other management personnel. So according to AS 15 also include directors or management personnel. Okay. So basically for accounting benefits, AS 15, Accounting Standard 15 includes all the employees, whether they are permanent, temporary, casual, full-time, part-time, or also include directors and managers. Okay. So for employees benefit plan, AS 15 include all these persons in employees. Furthermore, AS 15 deals with the employee benefit, which includes short-term employees benefit. So according to AS 15 comprises four kinds of employees benefits, that is short-term employees benefits, post-employment benefits, other long-term employees benefits, and termination benefits. So what do you understand by short-term employees benefits? So these includes wages, salary, social securities, contributions such as contribution to an insurance company made by the employer in order to pay the medical care of the employees, paid annual leaves, profit sharing and bonuses. Bonuses are payable within 12 months of the end of the period, and more monetary benefits. Those include car, housing, medical care, and free and subsidized goods and services for current employees. So basically, in short-term employees benefits, AS 15 will include the wages, salary, social security contribution, any insurance paid by the company to the employees, any profit sharing bonuses, any medical services, any car services. All these will be included in short-term employees benefits. But the duration of payment of these benefits will be less than 12 months or maximum 12 months. Within 12 months, you have to pay these expenses, these benefits. Then in that case only, these benefits will be included in short-term employees benefits. Okay? So basically, those benefits which is given, which is repayable, or which is the payable to the employee within 12 months. Okay? So those all these benefits will be included in short-term employees benefits. Okay. Now second is post-employment benefits. These include gratuity, pension, other retirement benefits, post-employment life insurance, and post-employment medical care. So you are generally seeing in government services there is medical facilities given to the government officers after the retirement age. So these all are services will be included in post-employment benefits. So in post-employment benefits, gratuity, pension, retirement benefits, post-employment life insurance, and post-employment medical care is included. Okay? We generally see that pension is also provided to government employees after their retirement. So all these benefits will be included in post-employment benefits. Okay? Next is other long-term employees benefits. These include sabbatical leave, jubilee, or other long-term services benefits, long-term disability benefits. Furthermore, if such benefits are not paid wholly within 12 months after the end of the period, then profit sharing bonus and deferred compensation will be paid. So basically, in long-term employees benefits, all the benefits will be included, which are not payable and not paid under or within the 12 months after the end of the period. So in long-term employees benefits, all those benefits will be included, which will be paid after 12 months, which will not be paid within the 12 months. Okay, so these all benefits, those all benefits will be included in
termination benefit. What is the termination benefit? This is the benefit given to employee when he leaves the organization. When some employee or when any employee leaves the organization, then some compensation is given to him or her, or any other benefits given to him or her, then in that case, that benefit will be known as termination benefit. So these benefits are basically those benefits who provided to an employee at the time of leaving of organization. Okay. Yes. Now let's understand in detail then what will be the accounting treatment of short-term employees benefit and what is included in short-term employees benefit. So let's see. First, short-term employees benefit. So as per AS 15, short-term employees benefit consists of wages, salaries, social security contribution, short-term paid absences such as paid annual leave, where such absences are expected to take place within 12 months after the end of the period during which employees provided related employee services. So in short-term employees, first you will include the wages and salaries and social security contribution, and also include the absences which is paid or which is taken place within 12 months after the end of the period during which employees provided that employee services. So employee जिस EMI सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसमें within 12 months अगर कोई absent गेन करता है, एब्सेंट लेता है, कोई लीव दे देता है कोई भी एम्प्लॉई, तो उसका जो बेनिफिट उसको दिया जाएगा, मतलब पेड लीव जो दी जाएगी, वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट में इंक्लूड करेंगे. So if employee paid the leave within the 12 months, okay, then that leave will also be included in short term employees benefit. That paid leave will be included in short term employees benefit. Okay. Then profit sharing and bonuses payable within 12 months. So any profit sharing and bonuses which is paid to the employee within 12 months of his services, in which year he is giving the services. Okay. Then next is non-monetary benefits including medical care, housing, cars, fee, and subsidized goods service for current employees. So if you provide any non-monetary benefit which is not provided in monetary terms, then like medical care, housing, cars, and all these benefits will also be included in short-term employees benefit for the current employees. Okay. If it is provided to any past employee, then that expenses will fall under past employment benefits. But if you provided these services to any current employee, then this will be included in short-term employees benefit. Okay. Now, how will you measure, recognize these short-term employees? Recognize means how will you record these short-term employees benefits? Okay. So what will be the recognition and measurement conditions? Whenever an employee provides services to an enterprise during an accounting period, the enterprises must identify the undiscounted amount of short-term employees benefits that are anticipated to be paid for that services. So in the case of, mostly there is the term that is undiscounted. What is the discounted amount and undiscounted amount? See, let's understand with an example. आपने कभी ऐसा देखा होगा स्क्रैप वैल्यू नाम की टर्म सुनी होगी. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी एसेट अगर आपकी है उसकी लाइफ 10 इयर्स है, तो आफ्टर 10 इयर्स उसको कितने अमाउंट में आप मार्केट में बेच सकते हो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कितना पैसा आप उससे रिसीव कर सकते हो एसेट्स को बेच के, क्योंकि उसकी लाइफ तो 10 इयर्स के बाद खत्म हो गई. सपोज आई हैव अ मशीन इन माय कंपनी और मेरी उस मशीन की मार्केट लाइफ है 10 इयर्स. अब 10 इयर्स के बाद जब मैं उसको मार्केट में बेचने जाती हूँ तो वो मशीन की सेल्स प्राइस और वो मशीन बिकती है सपोज 10,000 रुपीज में. तो 10,000 क्या है उसका स्क्रैप वैल्यू. तो 10,000 वैल्यू उसकी कितनी कब है? आफ्टर 10 इयर्स. तो आज उसको रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रैप वैल्यू को आज रिकॉर्ड करने के लिए हमको उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी. और वो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक प्रेजेंट वैल्यू की टेबल आती है जिसमें इंडेक्सेशन होता है आपको, इसमें कुछ इयर्स के लाइक अमाउंट गिवन होता है, लाइक जैसे कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं. 2016-17 के लिए प्रेजेंट वैल्यू 0.25 और 0.25%. रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है 2.5% और 0.25%. इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू की आप एक टेबल आती है, उस टेबल के हेल्प से आप उसके जो 10 इयर्स बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आज आपको उसको रिकॉर्ड करना है. तो आज उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है थ्रू द टेबल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. ओके. तो जो ये हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको ही हम बोलते हैं डिस्काउंट करना. हम उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो
employees benefit, you are not required to discount the amount of benefit. आपको आज की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब ही है कि विद इन 12 मंथ्स वो पेड हो जाएंगे, तो उनके आज की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विद इन दिस ईयर दीज बेनिफिट्स विल बी पेड. तो इस ईयर की ही वैल्यू उसकी गिवन है, इसलिए आपको सेपरेटली डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है. तो whenever the employees provide services to enterprises during the accounting period, the enterprises must identify the undiscounted amount of short-term employees benefit that is anticipated to be paid for that services. तो जो भी उनको हम benefits देने वाले हैं, जो भी benefits का amount होगा, उसको undiscount करे बिना as it is आपको record करना है. Okay? Accordingly, such employees benefit are recognized as, इनको recognize कैसे करेंगे, कहाँ आपको इसको accounting कहाँ करनी है, इसकी कहाँ record करना है. A liability after deducting any amount employees benefit that is already been paid. Furthermore, if the amount of employees benefit paid more than the undiscounted amount of benefit, the enterprise is required to identify such an excess as a period of prepaid expenses, that is an asset. The prepayment should be identified as an asset in such a way that there result in reduction in future employees benefit payment or cash or receipt. Okay, so basically आपको ये जो रिकॉग्निशन करना है, बेनिफिट प्लान जो है, आपको जो बेनिफिट देना है, जो अमाउंट पे करना है, दैट इज लायबिलिटी फॉर यू. ओके, बिकॉज आपको फ्यूचर में उसको पे करना है. आप विद इन 12 मंथ्स आपको वो एम्प्लॉयज बेनिफिट, वो अमाउंट जो एम्प्लॉयज बेनिफिट का है, वो एम्प्लॉयज को पे करना है. ओके, so this is liability for you, that's why you will show these employees benefit and liability side. But जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया उनको अमाउंट, जो बेनिफिट्स आपने उनको दे दिए हैं, कोई बेनिफिट ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उनको आपको लायबिलिटी में से लेस कर दें. या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, उनको एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दिखा सकते हैं कि आपने पहले ही उनको प्रीपेड कर दिया, पहले ही जब वो ड्यू हुए, ऐसे बेनिफिट्स ड्यू हुए, उसके पहले ही आपने पे कर दिया. तो आप चाहें तो लायबिलिटी साइड से लेस करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से शो कर सकते हैं. Okay, so this is the recognition requirement of the short-term employees benefit. Okay, now let's move on to next benefit, that is post-employment benefit. As mentioned above, post-employment benefit consists of retirement benefit, that is pension or gratuity. Other benefits, example, post-employment life insurance and post-employment medical care. All these will be included in post-employment benefit. That means आपको रिटायरमेंट के बाद भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, that will be included in post-employment benefit. Okay. Now, such benefits are extended to the employees in the arrangement known as post-employment benefit. This is not relevant for you. But we may convey all such arrangements that this is also not relevant for you. Yeah. Now see. Furthermore, these post-employment benefits plans are classified into two. This is very important topic of AS50. Two types of post-employment benefit is very important for AS50. So let's see. Yes. So post-employment benefits को हम two parts में divide करते हैं. First will be defined contribution plan and second is defined benefit plan. So what do you understand by defined contribution plan? Defined contribution plan means ऐसे प्लान जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑनली डिफाइंड है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, सिर्फ यही डिफाइंड है. उसके अलावा कितना रिस्क बियर करेगा, क्या होगा उसके बाद कुछ भी नहीं. सिर्फ एम्प्लॉयर ने इतना बता दिया कि आपके पीएफ में हम इतना अमाउंट पर मंथ या पर ईयर इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं. सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिफाइंड है. एंड इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान आपके बेनिफिट का प्लान डिफाइंड है. जैसे लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजुटी. ग्रेजुटी में आपको ये बताया जाता है, ग्रेजुटी में ये नहीं बोल रहे थे कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा, आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 years सर्विसेज यू विल रिटायर्ड एंड ग्रेजुटी विल प्रोवाइडेड टू रुपीज 10 lakhs टू यू. ग्रेजुटी के 10 लाख रुपीज आपको मिलेंगे. तो अब इस कंडीशन में बेनिफिट कितना मिलने वाला है, दैट इज 10 लाख रुपीज, वो डिफाइंड है. जबकि पहले वाले में क्या था, सिर्फ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिफाइंड था कि आपके पीएफ में हम हर ईयर और इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे. एम्प्लॉयर आपके पीएफ में प्रोविडेंट फंड में इतना अमाउंट हर बार डालेगा. अब एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ योर प्रोविडेंट फंड क्या उस पे रिटर्न का रेट क्या रहेगा, दिस इज नॉट बियर द एम्प्लॉयर. इसका एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने अपना बेनिफिट प्लान नहीं डिफाइन किया, उन्होंने सिर्फ कंट्रीब्यूशन प्लान डिफाइन किया है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा.
So at the end of the services and at the end of the amount of years maturity, ईयर की मेच्योरिटी के टाइम आपके रिटर्न का अमाउंट क्या चल रहा है, रिटर्न का रेट क्या चल रहा है ईयर पे, इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है, वो उसका जो भी आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, तो उस पे प्रॉफिट होगा आपको या लॉस होगा, वो सब कौन बियर करेगा, एम्प्लॉय बियर करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयर की, उसकी बेनिफिट प्लान की कोई कितना बेनिफिट आपको मिलेगा एट द एंड उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में क्या होगा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में सपोज इसे वैसे पीएफ इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, बट एक बार हम फिर से एग्जांपल लेते हैं पीएफ का, पीएफ इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ एक बार एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज प्रोविडेंट फंड आपका कंट्रीब्यूशन प्लान ना होकर डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, तो फिर आपका एम्प्लॉयर क्या देगा एट द एंड ऑफ द सर्विसेज और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पीएफ आपको जो बेनिफिट मिलेगा इससे पीएफ से जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 20 लाख, सपोज 20 लाख रुपीज आपको मिलेगा। नाउ जो इंटरेस्ट का रेट चल रहा था उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करी तो आपके पास आया 15 लाख का अमाउंट के लिए आप एलिजिबल थे, बट एम्प्लॉयर ने क्या आपको प्रॉमिस किया था, आपको बेनिफिट प्लान पहले से बता डिफाइन कर दिया था कि आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, तो 5 लाख रुपीज का रिस्क किसको क्लियर करना पड़ेगा नाउ, एम्प्लॉयर को, और इन द कंडीशन वेयर द प्लान इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, तो फिर किसको क्लियर करना पड़ रहा था, एम्प्लॉय को, बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो भी रिस्क है किसको क्लियर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को। Okay, so this is the basic difference between these two things. So let's see what is the defined contribution plan. As per the defined contribution plan, an enterprise's obligation is restricted only the amount that it agrees to contribute to such a fund. तो एम्प्लॉयज का ऑब्लिगेशन कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, जितना वो कंट्रीब्यूट करता है इन फंड्स, ओके, that is to say the amount of post employment benefit services by the employees is based on the amount of contribution made by such an enterprises as well as the employee towards his post employment benefits plans or his insurance company and investment return earned by such contribution. This is not really good for you. Thus, the actual risk that is benefit would be less than the expected and investment risk that is assets invested would not be sufficient to pay the expected benefit. Both fall on the employees. So, risk will be fall on the employees. That is, I have already told you that the risk will fall on employees. Okay. So, at the time where the plan is a defined contribution plan, the risk of the actual risk will be on employees. Okay. Yes. Now, how will we recognize or measure the post contribution plan, defined contribution plan? Whenever an employee provides services to enterprises during the accounting period, the enterprises must identify the contribution payable to defined contribution plan in exchange for that services. Such employee benefit are recognized as, ये benefits कैसे recognize करेंगे, कैसे record करेंगे, कि a liability after deducting any amount contribution already been paid. आप इसको liability साइड में, because ये अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है, दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ कंपनी, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी साइड में आप इस अमाउंट को दिखाएंगे, लेकिन आप डिडक्ट कौन सा अमाउंट कर देंगे, व्हिच यू हैव ऑलरेडी पेड टू एम्प्लॉय, जितना अमाउंट आप ऑलरेडी एम्प्लॉय को पेड कर चुके हैं वो आप लेस कर देंगे, क्योंकि नाउ फ्रॉम दैट अमाउंट यू हैव नॉट लायबल टू पे, उतना अमाउंट आप पे करने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड दैट अमाउंट, दैट्स व्हाई यू विल लेस दैट अमाउंट व्हिच हैव ऑलरेडी बीन पेड. Furthermore, if amount of contribution already paid is more than the contribution to your services before the date and balance sheet, such excess contribution should be recognized and assets. Same thing कि अगर आपने कुछ जो आपकी लायबिलिटी बनती है उससे ज्यादा अमाउंट आपने एडवांस में पे कर दिया, दैट मींस दिस इज योर एसेट्स और यू विल शो ऑन एसेट साइड दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, अंडर द हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आप इस अमाउंट लिखेंगे कि आपने एक्सेस में पे कर दिया, ओके. Yes. Now, furthermore, there can be cases where contribution made to defined contribution plan do not become due or owed within 12 months after the end of period of the which employees provide related services. In such case, contribution should be discounted using discounting rate as specified under the accounting standard booklet. So basically, अगर आपका ये defined plan है, defined contribution plan है, इसमें जो भी अमाउंट आपका अगर 12 मंथ्स में ड्यू नहीं होता है, विदिन 12 मंथ्स ड्यू नहीं होता है, दैट मींस आपको डिस्काउंट की उसको डिस्काउंट करने की नीड है. डिस्काउंट करने की नीड मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड है टू द टेबल
table of present value you have to, there is a fixed formula to calculate the present value through the table, but that is not relevant for you. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिस्काउंटेड वैल्यू होती क्या है. डिस्काउंटेड वैल्यू ये होती है कि इन फ्यूचर आपको जो अमाउंट मिलने वाला है या जो एक्सपेंस आपको होने वाला है उसकी आप आज रिकॉर्ड करना है, आपको तो आज रिकॉर्ड करना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. प्रेजेंट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो उसको आप बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू. तो अगर वो विदिन 12 मंथ कोई भी एक्सपेंस अगर विदिन 12 मंथ आपका पे होने वाला है, ड्यू होने वाला है, तो आप उसका डिस्काउंट करने की नीड नहीं होती क्योंकि वो इसी ईयर में होगा. ठीक, जो करंट ईयर है उसी ईयर में होगा, तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू वो तो आपको पता ही है. बट अगर आपका ये एक्सपेंस आफ्टर 12 मंथ्स ड्यू होने वाला है, विदिन 12 मंथ्स ड्यू होने वाला नहीं है, देन यू हैव टू डिस्काउंट दैट अमाउंट ऑन द यूजिंग द डिस्काउंटेड रेट ऑन डिस्काउंट ऑन द by the use of discounted rate. Okay? तो अगर 12 months से ज़्यादा का है benefit plan तो आपको discount के वैल्यू कैलकुलेट करना है. Then what do you understand by defined benefit plan? As per the defined benefit plans, the enterprises has an obligation to extend the agreed benefits to both current as well as the common employees. Furthermore, the actual risk that is benefit would cost more than the expected and investment is both fall on enterprises. So risk will fall on enterprises in the case where this is the defined benefit plan. So this is the difference between defined contribution plan and defined benefit plan. Defined contribution plan में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरप्राइजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रीब्यूशन पर है, रिस्क वो बियर नहीं करेंगे, रिस्क कौन बियर करेंगे, एम्प्लॉय. जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में रिस्क किसका होगा, एंटरप्राइजेस का होगा. ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू यू. Also more. Now see what is the recognition and measurement of defined benefit plan. So defined benefit plans may be either the unfunded or wholly or partly funded via the contribution made by the enterprises and at the time made by its employees into entity or a fund. Such a fund is legally different from reporting enterprises from its employees benefit are paid. According, the payment of such funded benefits depends not only the financial position as well as the investment performance of the fund, but also the enterprise's potentially to provide or any shortfall of assets of that fund. See what happened in the case of defined benefit plans. आपको पता है कि आपको इतने साल बाद एम्प्लॉय को इतना पैसा देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक प्लान्ड एसेट्स बनाते हैं. प्लान्ड एसेट्स मतलब एक एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं कि इस एसेट्स को बेच के हम इतना पैसा जो भी उनका पैसा होगा बेनिफिट्स का वो हम किसको देंगे, एम्प्लॉयज को. तो उसके लिए आप एक प्लान्ड एसेट्स आप रखते हैं. तो यहाँ उसी के बारे में बात करेंगे, सब कुछ उसी के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज द प्लान्ड एसेट्स. तो एज अ रिजल्ट the expenses identified for the defined benefit plan is it is not mandatorily the amount of contribution that is outstanding for the given period. So how will we recognize? This is all about your planned assets. Planned assets means जो आपने इस जो assets आपने प्लान कर रहे थे इस assets को बेच के हम एक employee benefit employee को उसका amount बता देंगे, इतना amount हम उसको पे कर देंगे, that is called planned assets. Okay. So how will you recognize this? So in balance sheet, the amount to be recognized as defined benefit liability in the balance sheet should be the net of total present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date. Subtract any past service cost not yet recognized and subtract the fair value of balance sheet on date of plan assets out of which obligation are to be settled directly. So balance sheet में आपको liability side में defined benefit plan को record करना है. कैसे, अमाउंट क्या होगा उसका, पहले आप उस प्लान का डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑब्लिगेशन जो आपकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसमें से आप लेस करेंगे अगर कोई पास्ट सर्विस कॉस्ट है जो अभी तक रिकॉग्नाइज आपने नहीं करिए, रिकॉर्ड नहीं करिए, जो आपने पहले ही पे कर चुके हो आप वो लेस कर देना है. और क्या लेस करना है, आपकी जो प्लान एसेट्स है, जो प्लान एसेट जिसको बेचकर आपने एक्सपेंडिचर आपको देना है, जो आपको बेचकर आपके एक्सपेंडिचर को फेस करना है, जो एसेट्स हमने प्लान करे थे इस एसेट्स को बेच के हम क्या कर देंगे, एम्प्लॉइज को पे कर देंगे, उसकी जो फेयर वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग और एट द टाइम ऑफ करंट ईयर, इन द करंट ईयर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको भी आपको लेस कर देना. तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द साइड ऑफ लायबिलिटी. ओके, नाउ देन स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे रिकॉर्ड करना है. द एंटरप्राइजेस नीड टू रिकॉग्नाइज द टोटल ऑफ फॉलोइंग अमाउंट इन द P&L अकाउंट: करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न,
actuarial gains and loss, past services cost, and effect of any settlement. Will all these all amount will be recorded in statement in P&L account. तो करंट सर्विस कॉस्ट जो आप उसको पे कर रहे हैं, करंट सर्विस मतलब जो भी एम्प्लॉयर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसकी जो करंट सर्विस कॉस्ट है उसको आप ऐड करेंगे. इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आपने इनको सपोज ये अमाउंट आप एम्प्लॉय को दोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया है उसके ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट. एक्सपेक्टेड रिटर्न और एनी प्लान एसेट्स, अगर आपकी जो आपकी प्लान एसेट्स है जिसको आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसेट्स में, इसके लिए ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा तो हम इस एसेट्स को बेच कर पैसा एम्प्लॉय को दे देंगे. उसके ऊपर अगर कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न है देन वी विल रिकॉर्ड इट इन profit side or in credit side of the P&L. Actuarial gain and losses. What is actuarial gain and losses? से आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ 8 इयर्स तक काम करेगा, ओके, तो उस हिसाब से आपने बेनिफिट प्लान्स बनाए, लेकिन हो सकता है वो आपके 5 साल में ही छोड़ के चला गया आपकी कंपनी को. तो एक्चुअल में आपने एस्टिमेट तो लगाया था कि 8 साल बाद जाएगा, लेकिन अब एक्चुअल में आपकी कंपनी को कब छोड़ के चला गया, 5 इयर्स में. तो इसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस या गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल गेन और लॉस. एक्चुअल में आपको जो लॉस और गेन है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे. पास्ट सर्विस कॉस्ट, अगर हम पास्ट सर्विसेज उसको कुछ देते हैं तो उसकी कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे. एंड इफेक्ट ऑफ एनी सेटलमेंट, अगर आपको कोई सेटलमेंट होता है थ्रू द प्लान्ड एसेट्स तो उसको भी आप शो करेंगे P&L. ओके, तो ऑल दीज कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L account. Now let's move on. There is third type of employee benefit, that is other long-term benefits. So basically other long-term benefits are which is due or payable in after the 12 months, which is not due or not payable within the 12 months. Okay, so these will be known as long-term employee benefits. So in this they include long-term compensated absences such as long services or sabbatical leave. Okay, so जो ऐसे leaves जो within 12 months ली जानी उनको तो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में इंक्लूड करेंगे. और ऐसी पेड लीव जो मोर देन 12 मंथ्स पे आप ले सकते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आप ले सकते हैं, मोर देन 12 मंथ्स पे ले सकते हैं, तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट. अदर long service benefits, long term disability benefits, profit sharing and bonuses which are payable after 12 months or more after the end of the period which employees is offered to related service. ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग और बोनसेस जो कि पेबल है आफ्टर 12 मंथ्स, therefore compensation paid 12 months or more after that period. Okay? So all these expenses will be included, all these benefits will be included under long term benefits. Okay? Then how will we recognize and measure these benefits? First, in balance sheet, how will we record the amount to be recognized as the defined benefit liability should be the net total of the following: present value of defined benefit obligation at the balance sheet date and subtract the fair market value at the balance sheet date of planned asset. तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, क्योंकि ये देखिए आपके बेनिफिट्स कब ड्यू हैं, कब पे होंगे, आफ्टर 12 months. So if there is any expenses which is going to due or which is being due or paid after 12 months, then we have to calculate, we have to do the discounted value, we have to calculate discounted value of that expense of that income. So first we will take the present value, we will calculate the present value of that expense or that benefits, then we will subtract the fair market value at the balance sheet date of plan assets. So plan assets की जो भी fair market value उसको हम less कर देंगे from present value of defined benefit obligation. Okay, so resulting amount will be recorded in balance sheet. Okay, at liability side because this is your liability to pay the employee that amount. Okay. Now, how will we record in P&L accounts? In P&L account same, we will record current service cost, interest cost, expected return on any plan, actuarial gains and loss, past services cost, or effect of any settlement. Okay. So all these will be recorded in P&L account. Now, last but not least, termination benefits. So basically, termination benefits are the benefits which is given to an employee at the time of leaving of the company, okay, or leaving of the enterprise. So see which terms will be included in employee termination benefits, which benefits will be included in termination benefits, and enterprise
enterprise's decision to put an end of the employee's employment before the normal retirement date, employee's decision to retire voluntary in lieu of such benefits. There is two type of leave, or there is two type of retrenchment. First is retrenchment, second is voluntary retirement. तो जब भी कोई कंपनी को छोड़ के जाए एम्प्लॉई तो वो कंडीशन में छोड़ के जाते हैं तो रेटरेंचमेंट, जब कंपनी उनको रेटरेंच करे, एंड सेकंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, जब एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। तो फिर टू कंडीशन, एक तो जबरदस्ती कंपनी ने रेटरेंच किया हो या रिटायर किया हो बिफोर द रिटायरमेंट डेट, या फिर बिफोर द रिटायरमेंट डेट कुछ बेनिफिट्स की वजह से एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाए। तो दिस मे बी टू कंडीशन इन द केस ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट। So AS15 pays termination benefit different from other employees benefit. This is because the event that result in such an obligation is termination is not employee services. So this is not relevant for you. How will we recognize and measure these termination benefits? So to record these termination benefits, the enterprises must identify the termination benefits as the liability and expenses if needed. So these termination benefits will be recorded in liability side and in P&L in expense side. If only the enterprise has the present obligation on account of a past event, it is possible that the outflow of resources that symbolize economic benefit would be needed to settle the obligation. Amount of estimated can be estimated reliably. अगर वो अमाउंट आप रियलाइबली कैलकुलेट कर पाते हो, एस्टिमेट लगा पाते हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। एंटरप्राइजेस हैज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, और उसमें आपका जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है, एंटरप्राइजेस की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए इन current year. Okay, in present the obligation must be exist. Only in that case you will record that liability expenses, record that as liability and expenses. Or second condition, it is possible that the outflow of resources that symbolize economic benefit would be needed to settle the obligation. So it may be that you have some outflows, or you have sale the any plant assets, and through that land assets you settle the obligation. Okay, so to recognize the termination benefit, there must be three conditions. First, the present obligation must be there. Second, there may be a planned assets through which you give the benefits to the employees. And third, the amount that you are going to pay, this must that is reliably estimated. Okay? तो वो अमाउंट आपका एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर एक रिलायबल फैक्ट्स के साथ एस्टिमेटेड होना चाहिए। So this is all about accounting standard 15. So that's it for today.